We are discussing about the mother axis, right? This is the plant over here to which the flower is attached. So this one we call a mother axis, right? Next, here the sepals are there, petals are there. So exactly towards the mother axis, what type of sepal is arranged? Outer है, inner है, twisted है, along the margin है, what type of arrangement, right? So that's why this mother axis we represent in this way when we make a floral diagram in a dotted form, right? Now we check towards the mother axis exactly this sepal has what type of arrangement. Suppose inner है तो उसके हम दोनों एंड्स ऐसे इनर बनाएंगे फर्स्ट, ओके अदर्स बनाएंगे तो अल्टीमेट ऑटोमेटिकली वो इनर हो जाएगा. देन hypothetically we consider over here imbricate estivation is there, right? Then next sepal हम check करेंगे तो in that twisted pattern is there, so like this. फिर थर्ड हम सीक्वेंस में जाएंगे चेक करेंगे तो उसमें टोटली आउटर है. फिर 4 and 5 चेक करेंगे तो दिस टू आर ट्विस्टेड एस्टिवेशन, twisted type, right? In some of the flower, in one flower, see this one is imbricate estivation, right? Next, my mistake. See, this one is inner, outer, and remaining 3 are twisted, right? So in one of the flower, in calyx, when you observe, understand this. When you observe, then you get this type of condition, right? आपने mother axis से start किया, तो आपको ये pattern मिला imbricate का. When we study any other one, in which again the imbricate activation is there, but over here twisted form is there, then outer one is there, then inner one is there, and remaining 2 again twisted. Both are imbricate. आपको समझ में आ रहा है? Both are imbricate, 1 plus 1 plus 3 condition, 1 outer, 1 inner, 3. But in that, their arrangements are same or different? Their arrangements are same or different? Dia? Ma'am, different. Different, right? So exactly at see, to make a correct floral diagram with each and every respective word, we have to first understand the mother axis. We have to see the mother axis and start, okay, जो estivation learn करना होता है, start from that mother axis. Mother axis के पास जो sepal, petal होता है, first that we have to check whether in a along the margin, twisted, outer, inner, what type, and then we have to follow that entire circle. बोलिए आपको ये क्लियर हुआ मदर एक्सिस का रोल एंड ऑल? मैम एक बार Yes फिर or no? से शॉर्ट Okay. में मदर एक्सेस समझाओगे? Yes, sure. Right? Flower is attached to the axis of the stem. This axis we call mother axis. Right? Now we have to make sure that अगर हमें डायग्राम बना रहे हमें करेक्ट डायग्राम बनाना, right, for each and every flower, that exactly what type of estivation is there. Estivation में भी sepals petals के arrangement कैसे है, right? So हम कोई भी sepal और petal से start नहीं कर सकते. We have to follow the which one, we have to start with the which one, the sepal or petal arrange towards the which one, mother axis. फिर यहां से स्टार्ट करके हमें राउंड कंप्लीट करना होता है. समझ में है, right? And by this way we can easily understand what type of estivation, what type of arrangement of sepals or petals in this flower. Gia, understood? Yes, ma'am, clear. चलिए. So now we are going to make
how to make a floral diagram, that I am explaining to you, that and what type of information we get from a floral diagram, that is also important. Always make first floral diagram, mother axis. Whenever you start preparing the, आपको मेरे साथ ही बनाना पड़ेगा फ्लोरल डायग्राम. ओके, फॉर दैट आइदर आपके पास राउंडर होना चाहिए और बैंगल, कोई भी सर्कल बनाने के लिए आप कुछ ले लो. ओके, एट द एंड आई विल चेक. शुभ, वीडियो ऑन करो. जयमीन राज, if you are not listening, I will remove you. It's your responsibility. Shubh and Jaimin Raj, last chance. Shubh, any problem? वीडियो ऑन नहीं रखना है उसमें. आपकी आवाज बराबर नहीं आ रही थी. बोलो, बाकी सबको आता है. एक्चुअली करेक्ट रीजन देते तो भी बेटर था. चलिए नेक्स्ट. फर्स्ट मेक अ डॉट. नाउ मेक अ लार्ज सर्कल. सी, मेरे पास तो स्क्रीन लिमिट है. यू कैन मेक अ लार्ज सर्कल. मैम लार्ज मतलब हाफ ऑफ द पेज कवर हो नो जाना नो चाहिए नो नो उतना. नो 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 नो, 10 लाइन्स एटलीस्ट कवर करो. आप फर्स्ट टाइम बना ओके. रहे हैं ना. ओके, फिर तो मैम आप 4 एग्जैक्ट लाइन का नहीं रेडियस से बना. था. अभी मैं फिजिक्स नहीं करवा रही हूँ. सिंपली 10 लाइन्स कवर करो, इतना सर्कल बनाओ. आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो, राइट. बट नाउ देखो, आप टेक्स्ट बुक ओपन रखना आपके साथ. टेक्स्ट बुक में देखो एक फ्लोरल डायग्राम दिया है विथ फैमिली के साथ नहीं, सेपरेट वन दिया है, राइट. इन दैट 4 सेपल्स 4 पेटल्स ऐसे अरेंजमेंट है. फर्स्ट ही फ्लोरल डायग्राम है. नाउ अंडरस्टैंड हाउ टू मेक. चलिए, आप देखो फ्लोर द वन which is arranged. Actually we are going to make a floral diagram of mustard. ये मस्टर्ड का डायग्राम है जो टेक्स्ट बुक में दिया है ना. लेबल नहीं है कि कौन सा फ्लावर है, बट मस्टर्ड है. नाउ नेक्स्ट, आपके पास इरेजर है, राइट. सो आपको क्या करना है, फर्स्ट विद द हेल्प ऑफ पेंसिल 1 2 3 4, सी फर्स्ट हियर, मेक अ 4 कट्स. एंड कट्स के साइड में जो थोड़ा पोर्शन है ना, वो इरेजर से इरेज कर दो आप पहले. तो आपके 4 सेपल्स फॉर्म हो जाएंगे. एंड 4 सेपल शुड बी इन इक्वल साइज. आप देखो, दैट्स व्हाई आई हैव मेड कट इन दिस वे कि 4 सेपल्स इक्वल साइज में हो जाए. मैम परफेक्ट होना चाहिए, इधर उधर चलेगा थोड़ा. परफेक्ट. देखो ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ व्हेन यू इरेज. नेक्स्ट, नाउ towards the mother axis in this flower, towards the mother axis in this flower, the sepal is there. This sepal has outer ends, so make like this. See over here, just इसको ऐसे आपको थोड़ा सा elongate कर दो, so it will become a outer, right. Then we follow in this circle, see, in this way. This is the first sepal that we have studied towards the mother axis. Now the second one, which has a inner ends, so 1 and 2, so both the ends inner. फिर third one, again it has a both ends outer.
सो 4 क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बिकम्स इनर. डन. अभी आप लोग आके क्या मत देना ना, पहले चलो मैं वेट कर रही हूँ. सो दिस इज द कैलिक्स लेयर, राइट. मेक श्योर ईच एंड एवरी सेपल शुड बी फ्री. मीनिंग व्हाट, आपने जब बनाया होगा ना, लिसन ओवर हियर एंड सी. सपोज ये पार्ट यहाँ पे टच कर गया, रॉन्ग. ये तो फ्यूजन दिखाता है, हमें फ्री सेपल्स ही बनाना है. सो ये पार्ट फ्री रहना चाहिए. ईच एंड एवरी सेपल शुड बी फ्री एंड शुड बी इन इक्वल साइज, राइट. यहाँ पे मेरा इक्वल साइज प्रॉपर नहीं आया है, मेरे पास स्क्रीन का लिमिटेशन है. नाउ इनर टू द कैलिक्स कोरोला वर्ल इज देयर. सो आपने जो कैलिक्स वर्ल बनाया, राइट, नाउ मेक वन मोर सर्कल इनसाइड दिस, like this. And now make cuts like this position. 1, 2, 3, 4. आपके जो कैलिक्स है ना, उसका हाफ पोर्शन आता है, देखो इफ यू कैन मेक आउट. कट्स बनाओ ऐसे एंड अगेन रिमूव द सम पोर्शंस with the help of eraser. So ultimately your diagram looks like this. Done? बोलो shoot. सर्कल ही रखना है. सर्कुलर ही है ना, मतलब हाँ रेक्टेंगुलर सर्क्यूलर. नहीं रखना है ना. नहीं, एंगुलर भी बनाओगे ये तो भी चलेगा, सर्क्यूलर भी ओके, एंगुलर भी ओके, बोथ आर करेक्ट, बट अरेंजमेंट शुड बी लाइक दिस. Done. Now next एंड्रोशियम बनाना है, स्टेमेन. अंडरस्टैंड के पहले कैसे बनाओगे. स्टेमेन का शेप ये बनाना है आपको. 1, 2, 1, 2 and then like this. One more time. ये stem. This is the shape of the stamen for floral diagram. Right? Now one more thing. In some of them, if you refer any other book, तो आपको ऐसे भी मिलेगा. 1, 2. This is also correct. But आपकी बुक में जो दिया है आपको उसके साथ ही okay, you have to go with that. ये भी correct है. This one is also correct. Right? कितने Both स्टेमन are बनाना correct. है? That I will tell you. But shape is this one. Shape clear? Now, in mustard, right, specific arrangement is there. This is the androgyne. Now, whenever you make floral diagram, calyx corolla तो हो गया. Next, at the center, first make a gynoecium. Androgyne उसके बाद में बनाना, easy रहेगा. At the center, make gynoecium. Right? Gynoecium के लिए देखो ऐसा है. 1, in that
बुक में देखो ये स्ट्रक्चर, एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर यू हैव टू मेक एट द सेंटर, राइट। अब फर्स्ट टाइम बना रहे तो फर्स्ट पहले गाइनोशियम बनाओ, सो इट विल मेक इजी फॉर यू। Now the turn of the androecium. In over here in mustard, stamens are arranged in two layer. Two layer meaning what? Here 2+4 condition. 2+4 meaning 2 are arranged outer side. See first over here. 2 are arranged on outer side towards the corolla. Not attached to the corolla but towards the corolla. So यहाँ पे दो बनाने हैं आपको and then towards the gynoecium in this way. मैंने जहाँ पे लाइंस बनाए, लाइंस में आपको ऐसा शेप ड्रॉ करना है, लाइंस के ऊपर यहाँ पे। Shape should be like this only, right? 2 totally outer दिखना चाहिए and 4 totally inner towards the gynoecium. मैम एक बार वापस से वो एंड्रोशियम दिखाओगे? हाँ चलो। Androecium in that 2+4 condition in case of mustard. So 2 अब मैम बाहर ओनली की, शेप हाँ wait 2 and then over here 4. Shape like this 1 2. Done. Now next, next चलो आप स्क्रीन के ऊपर मुझे दिखाओ डायग्राम कैसे प्रिपेयर किया है। ऑल ऑफ यू कीप योर बुक ऑन। कीर्तन, एंड्रोशियम पार्ट इज नॉट करेक्ट बिकॉज आपके 6 स्टेमन है ना एक ही लाइन में दिख रहे हैं, 2 टोटली आउटर, इसीलिए थोड़ा आप बुक ऐसे करो अगेन फ्रंट ऑफ कैमरा। गाइनोशियम का पार्ट थोड़ा स्मॉल बनाओ आप, गाइनोशियम पार्ट है ना थोड़ा स्मॉल बनाओ। अब देखो टेक्स्ट बुक में यू कैन मेक आउट, यहाँ पे भी आप देखो 4 आर टोटल इनर, व्हेन यू मेक अ सर्कल ना तो देखो एक आउटर बन जाएगा एक इनर, डॉटेड से अगर हम रिप्रेजेंट करें ना तो आपके 6 एक ही लाइन में दिख रहे हैं, राइट। मेक इट करेक्शन ओवर देयर। चलिए नेक्स्ट, मैत्री, यस मैत्री करेक्ट, एक्सीलेंट। साक्षी, साक्षी पेटल्स थोड़ा प्रॉपर बनाओ, वो नहीं दिख रहा है, हाँ डार्क कर दो प्रॉपर, बाकी सब करेक्ट है। एंड स्टेमन का शेप जो है आउटर वाले थोड़ा डिफरेंट जा रहा है, मेक इट करेक्ट। शू, पेंसिल से बना सकते हो ना, पेन से ही बना, या पेंसिल है या पेन है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है ये। चलो नेक्स्ट, अर्पिता। अर्पिता रॉन्ग, ये तो बटरफ्लाई हो गया स्टेमन में। देखो अर्पिता, स्टेमन ऐसे बनाना है, लाइन करके आपने ये बनाया है, राइट। Yes, ma'am. ओके नेक्स्ट,
झील झील आपने भी स्टेमेंस एक ही लेयर में बनाए हैं, 2 आउटर दिखने चाहिए, 4 इनर, वो रॉन्ग है, राउंडर से बाकी सब बनाया ना करेक्ट है। इसके लिए, हाँ, राउंडर से बनाया है, राउंडर लाइट की दिख रहा रिक्वायरमेंट होगा। है ही नहीं इसमें, राउंडर की कहाँ पे रिक्वायरमेंट है एंड्रोशियम ड्रॉ करने में। जिया, जिया 4 थोड़े और इनर साइड पे बनाओ, टूवर्ड्स द गाइनोशियम, गाइनोशियम को टच नहीं करना चाहिए बट टूवर्ड्स द गाइनोशियम, राइट। सी मैंने आपको करेक्शंस बोल दिए, यू हैव टू डू ऑल द करेक्शंस जिसको भी दिया है एंड सेंड इट योर डायग्राम टू मी। वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट थिंग, लास्ट थिंग फॉर टुडे, that what type of information we can get from this floral diagram, right? And how to write floral formula on the basis of this floral diagram. So first of all, on the see, जो sequence होता है to write the floral formula should be this one. First, you have to mention symmetry. Then whether it's a unisexual or bisexual, and then describe the 4 walls: calyx, corolla, androecium and gynoecium. Right? चलिए, फर्स्ट आप ये फ्लोरल डायग्राम से मुझे बताइए कि दिस वन इज एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक। इफ आई कट दिस फ्लावर इन दिस वे, कैन इट बिकम 2 equal half? Right? If this way, तो भी वो 2 equal half में। If this same, so this is the what type of symmetry? Radial or bilateral symmetry? This one is what type of symmetry? Radial or bilateral? Radial symmetry, right? So radial symmetry का symbol बनाना है आपको, डॉक्टर वाला symbol. चलो next, tell me, this is unisexual flower or bisexual? शुभ बोलो आप। मैम शुभ, बाइसेक्सुअल फ्लावर। yes, correct, it's a bisexual. So make symbol this. बाइसेक्सुअल। हाँ हाँ, correct, bisexual, right? Now describe the 4 walls. First I am explaining, rest all you have to tell me. First wall, this is this one, outermost, that we call the calyx, so symbol we write K. Here 4 sepals are present, so we write 4, and they are not fused, they are free, so we write without bracket. Can anyone tell me what should I write for corolla? Okay, one more thing over here, ये mustard का है, so 2 outer है and 2 inner है, 2 outer, 2 inner, right? That's why here represent in this way, 2 plus 2. 4 को कौन से फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे? 2 plus 2. That indicates 2 are arranged in outer side, 2 are arranged in the inner side. Right? But all without bracket. Remember. Now next. So पहले symmetry हो गया, unisexual, bisexual, then calyx. Now next there's a corolla. Can anyone explain corolla के लिए symbol C है? Maitri. It will be C4 without brackets. Yes, correct. C4. 4 free petals. Right? चलिए next. Androecium. एंड्रोशियम के लिए कीर्तन। मैम इसमें A2+4 होगा। यस, A2+4 बिकॉज 2 टोटली आउटर है and 4 towards the gynoecium, inner side. This 2+4 arrangement, okay, means here 6 stamens are not arranged in a one circle, but when we make a 2 circles, so 2 यहाँ पे मिलेंगे outer and 4 inner. That's why we write in this way, 2+4. Next, gynoecium के लिए हम G लिखेंगे first of all. Now,
In mustard, what type of placentation is present? Remember? बोलो कीर्तन. मैम parietal. Parietal placentation. In mustard, what type of ovary is present? Remember? Superior, inferior. Jia. Ma'am, superior. Superior, correct. Okay, so we make line over here below the G. And in this mustard, two carpels are present and they are fused with. So we write in this way. Okay, G2 in bracket. यहाँ पे जो आपको ओवरी का सेक्शन दिया है इन दिस वे, यहाँ पे ये है एक्चुअल अरेंजमेंट ऐसा होता है. ये देखो पैराइटल प्लेसेंटेशन दिखाता है कि सीड्स यहाँ से अटैच है व्हेन फ्यूजन हुआ, राइट. बुक में जो डायग्राम दिया है उससे आपको नहीं पता चलेगा कि पैराइटल प्लेसेंटेशन है, हाउ मेनी कार्पेल्स आर देयर, टू कार्पेल्स ओवर हियर, 1 and 2, and they are fused because parietal, if you remember, parietal placentation है, axial placentation है, in all that carpels are fused. फ्यूजन होता है वहां पे ही तो प्लेसेंटा फॉर्म होता है, राइट. So ultimately we write that entire formula like this: actinomorphic, bisexual, E2 plus 2, then corolla 4, androecium 2 plus 4, and gynoecium in this way, right? Now, today's homework, okay, some of the questions I am sending you in group. Some of the questions, okay, it will take some time, but today I will send, right? You question में लिखा होगा whether on the basis of the information you have to make a floral diagram, और like ऐसे floral diagram दिया होगा तो उसके बेस से आपको floral formula लिखना है, or else from the floral diagram you can describe a flower, like the floral diagram which we have drawn just now, in which I can say that 4 whorls are present in a flower. Flower has actinomorphic radial symmetry. Flowers are bisexual. Next, this flower has 4 whorls. Outermost, that's the calyx. In that 4 free sepals are there. Then corolla, 4 free petals are present. Then androecium, gynoecium. Like this, you have to describe a flower on the basis of floral diagram, right? Question में जो लिखा है उसको आपको follow करना है. To give a practice, try करना. नहीं आता है, I will help you in the next class, right? But at least try, right? And this floral diagram homework 3 times. Mustard floral diagram you have to draw homework 3 times, only 3 times, right?